लगता था जब ऐसे कोई कहता था। फिर आते थे सब, ये पायल तो इस कॉपी पे क्यों झुकी रहती है, मैम पायल कॉपी पे झुक रही है। फिर शर्म से आती थी, फिर मैं रोने लग जाती थी वहाँ। दिमाग खराब रहता बस हर टाइम। क्या हो गया, इससे अच्छा भगवान ठाई ले। If somebody is blind, there's no future. Cataract is the leading cause of blindness among children and adults. It's a news to a lot of people that kids suffer from cataract too. In medical terms, it is known as congenital, pediatric or developmental cataract. In Hindi, we call it motiabin. Good news is, it's treatable. Bad news is, many kids go without the treatment because of lack of awareness. They take this temporary blindness as permanent. In India alone, more than 2 lakh kids would remain or continue to remain blind or partially blind because of cataract. Payal is one of the lucky few who escaped this darkness. A 15-minute surgery changed her life forever. Let's take a look at her journey. मेरा नाम पायल है। मैं स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ और खेलती हूँ। मुझे धुंधला दिखता था, थोड़ा दिखता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी। मुझे इतने पास लानी पड़ती थी, इतनी दूर से तो मुझे दिखता ही नहीं था। मैं कॉपी में झुक जाती थी, सब मुझे कहते थे तो कॉपी में क्यों झुकती है, ब्लैक बोर्ड से नहीं दिखता था। तो मैडम ने बताया फिर इन्होंने एक बार ऐसे सिक्का फेंक के देखा, वो सिक्का नहीं दिखा था मुझे, उससे पता लगा। ऐसे यहाँ पर सिक्का फेंक के देखा, तो इन्होंने कहा पायल देखियो कहाँ है सिक्का, मुझे दिखाई नहीं वो, तो उससे पता लगा था इन्हें। पायल मेरी दोस्त है, बचपन से मेरे साथ ही रहती है। जान पूछ कर करती होगी ये, ऐसे ही लगा है ना, अंक सही है भाई, वैसे दिखता नहीं था सर। जब हमने सिक्का गिरा, मैं कहा उठाइए पायल, परेशानी रहती सर, दिखा नहीं था। स्कूल में जाती, पढ़े नहीं थी। और टीवी पे धुंधला दिखता था। पहले मुझे पास से देखने में, मुझे दूर से दिखता नहीं था, इसलिए पास से देखती होंगी मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं इसलिए वहाँ कुर्सी लगा कर बैठ के देखती थी। मुझे पता था मुझे दिखता नहीं दूर से, इसलिए मैं वहाँ जाके देखती थी। टीवी के पास ही बिल्कुल बैठ जाती थी, दूर से तो मुझे धुंधला दिखता था। खाना भी वही खाती थी। मैं नानी कहती थी, जब भी तो सारे कहते हैं अंधी अंधी, तो वो उसके पास बैठ के देख रही थी टीवी। Congenital cataract means that the child has a cataract since birth. 1 in 1,000 children go blind every minute because of any of these conditions, like one of them is cataract. It is so sad that this blinding condition can be treated, but yet it is not being treated because of lack of awareness. The parents are not even aware that the eye has to be screened. You're supposed to check that with the red reflex test. A simple direct ophthalmoscope can be used by any pediatrician or any local general practitioner. They just look with the simple instrument and see whether the child has a red reflex in both eyes. If there is no red reflex in both eyes, then it means that the child may have a cataract. बड़ों का सुना था, बच्चों का नहीं मैंने सुना। बच्चों का तो मैं भी सुना, बड़ों का होते बुढ़े जो से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, ये नहीं सुना था। मुझे छोटे बचपन में भी हो जा बच्चे, किसे दिखाऊं, क्या करूं, क्या नहीं, इतना पैसा है नहीं, कहाँ से लाऊं। जब तक मैं लास्ट में कह जाता भगवान बस ठाई ले से, अगर ना दिखे से। ऐसे लगा भाई सारी उम्र है, बहुत उम्र है, कोई छोटी मोटी तो उम्र है नहीं। अब वैसे आंखों देखो तो रोना था भाई, भगवान ऐसा ना किसी की आंखों में करे। According to the International Agency for Prevention of Blindness, half of the world's 1.5 million blind children reside in Southeast Asia region. There is one ophthalmologist, an eye doctor, for every 2 lakh people. Most of the eye personnel live in big cities and towns. Ironically, 75% of the population lives in rural areas, which is why government is reaching out to organizations like
World Health Organization, local non-profits, and individuals to reach out to people who have cataract. We found out that Mr. Amal Garg, Commissioner of Income Tax by profession, has been extensively working in the field of congenital or pediatric cataract. When I was a small kid, that time my father had the problem in his eyes. And unfortunately, Saharanpur is a very small town. He used to visit the best of the doctors in Saharanpur, but nobody could identify what is the problem with him. Gradually, he started losing vision in both the eyes. That time I thought that we are educated, we have resources also. Even then, my father lost almost both the eyes. So I should do something in the area of eye care for my city. We started working on cataract initially, and we used to have one big camp in the month of December every year. So it so happened that in one of the camps, a small girl aged about 7 to 8 years came for the inspection, checkup and inspection. The doctors told that she is also suffering from cataract. We were surprised to know that cataract can happen in a small child also. We immediately got the child operated for it, and fortunately she recovered. After 1 year, the surgery in the other eye was also done, so she got vision in both the eyes. That time we decided, so whatever cases are brought to us with respect to congenital or pediatric cataract, we should immediately get the surgery done, so that the child doesn't lose his or her eyes throughout his life. If somebody is blind, there is no future. It becomes very difficult to survive in the society if you are not able to see, or you are able to see only partially. So these things definitely have an impact on your daily routine. मैं घड़ी में देखा, मैं एक आँख से तो पहले एक आँख का ऑपरेशन हो गया था, एक आँख बिल्कुल साफ दिख रहा था और एक आँख बिल्कुल धुंधला. It is the most rewarding surgery because the child can see the next day. You can see the smile, The moment you remove the cataract, the child starts becoming so active, starts smiling. And the parents itself say, the child has become so active after the surgery. I said, yeah, because he couldn't see before that. It's really a very rewarding surgery, and it's not so complicated. The parents should not fear. I'm so happy with all these children, and in fact most of them are now studying in regular schools, and they are very confident in their life. Their parents are very happy. मुझे अच्छा लग रहा है, काम करवावे, स्कूल में जा, काम करे, आवे, ट्यूशन जा, और मुझे टेंशन नहीं थी इसकी. अब मुझे कोई चिंता नहीं इसकी. अब नो है चिंता, अब अपने पढ़ लेगी, लिख लेगी, 7 दिन ना हो तो अपने काम कर तो लेगी, काम या अपना कर खा लेगी. अब कोई चिंता नहीं मुझे इसकी, पहले चिंता. मुझे पढ़ाई करनी अच्छी लगती है, खेलना भी अच्छा लगता है, टीवी भी देख लेती हूँ. अब मैं साइकिल से जाती हूँ स्कूल. मैं पढ़े लिख के बड़े होकर रेलवे में नौकरी करना चाहती हूँ. अब पहले मेरी आँख से दिखता नहीं था, अब तो मुझे दिखता है. भगवान ने चाहे मेरी रेलवे में नौकरी लग जाए. More detailed story of Amel. His dad is a severe diabetic. In 1997 he lost his vision. दिख रहा है? Time is of essence in the treatment of congenital cataract. Our brain loses its connection with the eye if the corrective surgery takes years to be done. A simple red reflex test can help us determine any serious condition that a child might be suffering from. The burden of cataract lies heavily on people from low economic communities, especially women, which is why Payal is very fortunate to get this treatment. But we want to see many happy faces like her.